Hello children, how are you? I hope you all are doing well and studying well and eating and sleeping well. Okay, and listening to your elders too? Okay, now children, sometimes in our life such situations come that they turn us around. So we are going to learn about such an incident in this chapter. The name of the chapter is The Turn Around. Okay, the prologue says, willpower and patience are the most important traits for success in life. Willpower is the ability to persist in a work and get the desired result. Willpower is a kind of self-control. Patience is the ability to accept delay, trouble or suffering without becoming angry or upset. As humans, we have a natural drive to control ourselves, but this drive isn't found equally in all. While some children are patient, some others are impatient with weak willpower. We need to gain control over our wishes and weaknesses. So what does this say? This means that हमें अपने विल पावर पे कंट्रोल होना चाहिए. We have to have a strong willpower. We have to have a control over ourselves, our feelings, our success in life. Everything is into our control. How we treat our life. Whether we get impatient very quickly or we wait for the desired results very patiently. Okay, विल पावर मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है. पेशेंस होता है कि आपको जो अगर कोई चीज़ डिले हो जाती है तो शांति से वेट करना है कि कभी ना कभी तो ये दौर है जो निकल जाएगा. ओके, आपको एंग्री नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है. ओके, हम ह्यूमंस का नेचर होता है. वी ट्राइंग टू गेट वेरी इम्पेशेंट और हम सोचते नहीं हैं और हम बह जाते हैं और ऐसे ही तो उस टाइम पे जब हम बह जाते हैं तब इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज वी गेट कैरिड अवे एंड देन what happens is the end results may not be good for us. Okay, but ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत पेशेंट होते हैं and they are ready to wait for the right time to come and the right thing to face. But there are some children who are weak and they have a weak willpower. Okay, so now let's see what we have in this chapter for us. Warm up. Discuss with your teacher what role willpower plays in deciding what we shall become when we grow up. सो अपनी टीचर के साथ डिस्कस करो कि विल पावर क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से जब हम बड़े हो जाएंगे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी एंड अंडरस्टैंड दिस मोर बेटर. ओके, अमृता वॉज द ओनली गर्ल चाइल्ड इन हर फैमिली. She was loved by everyone. This made her so spoiled that she could not do any work at all. She would cry for every little thing. If she got a little stone in her shoe, she would cry. If she felt cold, tears would start rolling down her cheeks. Her mother would immediately make her wear layers of clothes. And if she ever fell and hurt herself, she would pull the house down with her loud cries. सो अमृता जो होती है घर की इकलौती बेटी होती है. ओके, जिसके सब लोग बहुत प्यार करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, जो वो चाहती है सब देते हैं. अगर वो उसको ठंड लगती है तो वो रोने लगती है, अगर वो गिर जाती है तो उसकी मम्मी उसको संभाल लेती है, अगर उसको बहुत ठंड लगती है तो मम्मी उसको अलग बहुत सारे कपड़े पहना देती है, और वो जब उसको कोई चोट लगती है या फिर वो हर्ट हो जाती है तो पूरा घर अपने सर पे उठा लेती है. So when Amrita grew up, her parents sent her to school. There too, she would cry for every small thing. The children made fun of her and nobody wanted to be her friend. This made her very sad. She realized how weak she was and wanted to change. For several days, she tried to bear pain and hardships, but she failed. And any little pain made her cry a lot. तो जब अमृता थोड़ी बड़ी हो गई तो ऑब्वियसली वो स्कूल जाने लगी. अब वो स्कूल जाने लगी, वहाँ पे भी वो छोटी छोटी चीज़ों पे रोती रहती थी. तो जब वो रोती थी तो सब उसका मजाक उड़ाते थे, कोई भी उसके साथ खेलता नहीं था, जिसकी वजह से कोई उसका दोस्त नहीं था और वो बहुत सैड होती थी. और उसको पता चल गया था कि वो बहुत वीक है और उसको अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है. Okay, so worried, she spoke to her father about this. He said, I will teach you a secret trick to turn you into a tough child. And what is that trick? Asked Amrita.
तो वो अपने पापा को जाके बता देती है कि पापा ऐसे ऐसे सब चीज़ है, अब मुझे तो स्ट्रांग बनना है, मैं क्या करूँ? तो पापा कहते हैं मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से तुम स्ट्रांग बन जाओगे। तो अमृता कहती है क्या है? तो पापा कहते हैं ईट स्वीट्स लेस, study for 5 minutes more and count to 5 before crying. Amrita could not believe it. She asked, "Is that all I have to do?" "Yes, that is all," said her father. "It's very simple, but it won't be easy. You will need strong willpower to do it." Amrita decided to follow her father's advice. तो पापा अमृता से कहते कि कम मिठाई खाना, ओके 5 मिनट ज़्यादा पढ़ना और रोने से पहले 5 तक गिनती करना। ओके तो अमृता कहते बस इतना ही करना है? तो पापा कहते हाँ इतना ही करना है, बट ये आसान नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए। तो अमृता कहती है कि ठीक है, मैं पापा का एडवाइस फॉलो करती हूँ। नाउ लेट मी सी हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड। Why did tears start rolling down Amrita's cheeks? How did Amrita behave when she started going to school? With whom did she discuss her problem? तो अमृता कैसे थी, क्यों वो रोती थी, क्यों वो रोया करती थी, जब वो स्कूल जाने लगी तो वो कैसे बिहेव करने लगी और उसकी प्रॉब्लम है वो उसने किसके साथ शेयर करी। You have to answer these questions to understand this chapter better. Okay? So the next day her mother offered her 2 sweets. 1 sweet less, thought Amrita. It wasn't easy to leave 1 sweet in her mother's hand, but she did it. She took only 1 sweet. Then every afternoon, Amrita sat down to study. When she was about to get up, she remembered her father's words, "Study for 5 minutes more." Although she could hear her favorite program on the TV, she decided to revise what she had done for 5 minutes. Okay? जब उसकी मम्मी ने उसको मिठाई दी तो उसने, जब मम्मी ने 2 मिठाइयाँ दी तो उसने सिर्फ एक ही ली क्योंकि उसके पापा ने कहा था, एंड शी वॉज फॉलोइंग हर पापाज एडवाइस। सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर टू डू दैट, इट वॉज नॉट ईजी, बट शी स्टिल अटेम्प्टेड इट। उसने एक ही मिठाई ली। जब वो दोपहर को पढ़ाई करने बैठती थी और बाहर के रूम में उसका फेवरेट टीवी प्रोग्राम चलता था, फिर भी वो 5 मिनट और पढ़ाई करने लगी। Okay, the same thing happened when she bumped into her study table in the corner of her room and fell down. She controlled herself and counted to 5. She was surprised to find that she did not cry at all. वैसे जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसकी टक्कर हो गई स्टडी टेबल के साथ, और स्टडी टेबल में जो कोना होता है वो उसको लग गया। तो उसने उसको अपने पापा का एडवाइस याद आया और उसने क्या किया, 5 तक गिनना शुरू कर दिया। जैसे उसने गिनती शुरू कर दी वो भूल ही गई रोना और वो बिल्कुल नहीं रोई। अमृता फॉलोड हर फादर्स एडवाइस फॉर अ फ्यू मोर डेज. Eat 1 sweet less, study for 5 minutes more, and count to 5 before crying. Okay, her willpower became stronger and she felt she was more patient now. The more she practiced, the easier it got. Before long, she realized that she could eat fewer sweets, study more minutes, and cry fewer times. Not only that, the children in her school stopped making fun of her and she made many friends. तो जैसे जैसे उसने पापा की एडवाइस फॉलो की, कौन सी एडवाइस थी कि ईट 1 स्वीट लेस, एक मिठाई कम खाओ, 5 तक गिनती करो और 5 मिनट और ज़्यादा पढ़ाई करो। ये 3 चीज़ें उसने पापा ने जो कही थी वो फॉलो की। जैसे जैसे वो फॉलो करती रही, डेली प्रैक्टिस करती रही, वैसे वैसे उसके लिए वो ईजी होते गया। उसकी उसकी विल पावर जो थी वो स्ट्रॉन्ग हो गई और इसकी वजह से वो जब स्कूल में जाने लगी उसका रोना कम हो गया, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ गए और इस वजह से उसके बहुत सारे दोस्त भी हो गए। सो चिल्ड्रन, remember, you can also follow these easy tips given by Amrita's father, okay? And study well, do the important words and also practice the difficult words, okay? और पापा की एडवाइस भी फॉलो करो, अपने भी और अमृता के भी, okay? And don't forget to do the back exercises.